Derivation of conduction equation in rectangular coordinates I completed. The next one is the cylindrical and the spherical coordinates according to the sequence we followed. Let me make a correction again, that in the previous lecture, after del, don't put this dot, right? Don't put this dot because it was already, the del operator already have done its job, so I will not put a dot here. So in the equations of that Fourier equation, it should be this q by a is equal to minus k del t. So there should be no dot here. And in the general heat conduction equation in the 3 dimension, del square t plus qg by k, right? Qg by k is equal to 1 by alpha del t by del t. So you can make this correction, and then let us resume our discussion on the derivation of heat conduction equation. Now we will start for cylindrical coordinates. I will not talk about the 3 dimensions, but I will explain that what are the 3 dimensions in a cylindrical coordinate. Okay, so put the heading. In the general heat conduction equation, it is cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. Suppose you have to derive a temperature profile in a cylindrical rod or in a wire. Now by default, in heat transfer or in any other subject, whenever the word wire is used, wire we always assume it to be cylindrical. We never assume wire to be rectangular. So इसीलिए आपके पास इस cylindrical coordinate system में जो energy जो conduction equation है वो अलग से होनी जरूरी है, right? So suppose we have a cylinder or a cylindrical body. There are 3 directions here. There are 3 directions, just like the Cartesian coordinate system. In cylindrical coordinate system also, there are 3 directions. Okay. Suppose this is the axis of the cylinder. You know, all the distances, the radius are measured from the axis of the cylinder. Now this direction is called Z direction, right? So you can consider that if the cylinder is of length L, so you can measure the direction in you can measure the length of the cylinder in any direction. You can say that, sir, this point is Z is equal to 0 and this point is Z is equal to L, right? So, or you can say this point is Z is equal to 0 and Z is equal to L. So if this is Z is equal to 0, this is Z is equal to L, it means that this direction is the Z direction. That is one direction. So heat conduction can take place in this direction also. Normally, when we solve cylindrical problems, the heat transfer in a cylindrical system, normally we say that there is no heat transfer in this direction. Generally, when you will get a question in GATE, आप देखोगे कि axial direction, this Z direction is called axial direction. So one direction is Z direction. So Z direction, derivation कर लेंगे. देखो derivation में मैं बता रहा हूँ, derivation केवल 2 लाइन की है. If you have understood the EG, QG, right? You have understood the C, you have understood the temperature, the equation, the internal energy and all those things. तो derivation को 2 लाइन लगेंगी, मैं drive कर दूंगा, ठीक है? This direction is called Z direction, which is also called axial or longitudinal direction. So पहले ये words clear होने चाहिए, तभी question clear होगा. Normally, in any question, we do not assume that heat is getting transferred in the axial direction. Why this happens? Actually, if you see the real bodies, if you see the practical situations, normally whenever we have a cylindrical body, it is normally very large as compared to its diameter. Generally, cylindrical body कौन सी होती है? Generally, it's a pipe. If you talk about a shell and tube heat exchanger, it's a pipe. Now, the length of the pipe is quite large as compared to its cross-section area, its diameter. And if the length is very large, there will be almost no heat conduction in this direction, right? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, the heat transfer resistance is directly proportional to L. The heat transfer rate is inversely proportional to L. Length जितनी ज़्यादा होगी, heat transfer rate उतना कम होगा. Fine. So generally जो हमारे पास सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर की लेंथ, जो सिलेंड्रिकल बॉडीज होती है, whether you talk about a pipe or let us take the example of electrical wire, what do you think? The length of an electrical wire is very large as compared to its diameter. So the heat transfer in that length direction is generally neglected in most of the problems. But yes, of course, if you talk about theoretical discussion, of course, there can be a problem which can say that the heat is getting transferred in this axial direction. So ये एक तो होगी axial direction. One more direction is radial direction. Now the radius
the distance. What is radial direction? Radial direction means we can say r direction. R direction means along the radius. This is called radial direction. Radial direction. So in radial direction, we can also call it, we can say that along the radius. Along the, इसे ऐसे ही समझते हैं, axial means along the axis, radial means along the radius. And where is the radius? Radius you always measure from this. So this is the radial direction, along the radius. Fine. So when you talk about the radial direction, this is the direction. You can consider that there are many imaginary cylinders. There are many imaginary cylinders. You can say that, sir, if this is the axis, there can be an imaginary cylinder here. ये imaginary है, ध्यान रखना, है ना, ये real नहीं है. You can say that, sir, this is the imaginary cylinder. Okay. I will try to make a lot of imaginary cylinder with different colors. So this is the imaginary one cylinder, right? This is the axis. This temperature and this temperature can be different, right? And then there can be a heat transfer in this direction. This is the longitudinal view. If you make this like this, this will appear like a circle. I'll make that also. Don't worry. Let me use other colors. You can also assume. You can also assume a cylinder like this. You can also assume this cylinder. Okay. And this can be at a different temperature, and then there will be direction, there will be heat transfer. Agar radial, obviously baat hai, if heat transfer is taking place in a particular direction, it means there are temperature gradients in that particular direction. Okay. You can assume a different cylinder. You can assume that one more imaginary cylinder is there, and all these imaginary cylinders are present at different temperatures. This shows the radial direction. Sorry. This shows the radial direction. Okay. This shows the radial direction. Okay. ठीक है? So you can see, you can assume that there are a lot of cylinders in between, and then heat is getting transferred in this direction. So the temperature at this point, suppose radial heat transfer is taking place. Suppose if axial heat transfer is taking place, the heat transfer is taking place between this end to this end in this direction. So there will be temperature gradients in this direction. यहाँ का temperature, यहाँ का temperature, यहाँ का temperature, यहाँ का temperature. ये सारे temperature क्या होंगे? अलग-अलग होंगे. If axial heat transfer is taking place, right? But if axial heat transfer is not taking place, it means the temperature in this direction, they will be same. If a radial heat transfer is taking place, then the temperature at this location, this location, this location, this location, it will be same. आप इसी को इसका cross sectional view भी देख सकते हो. Suppose if you make the cross section view of the same, it is better way of making the cross sectional views of this. So you can see that it will be, the cross section of this will be a circle. Okay. So एक मुझे circle बनाने दो, है ना? Trying to make a circle. Okay. Assume that it is circular. Doesn't matter. Okay. In this circle, you'll say that this is the center of the circle. Seems like it is more to the right. So this is the center of the circle. Okay. And from this center, this is the radial direction. So you can say that, you can assume, you can, ये composite body नहीं है, इसको आप मत कहना कि sir this is a composite body. This is not a composite body. I'm just trying to make some imaginary cylinders to show that what is the meaning of radial direction. Okay, these are the imaginary cylinders at various positions, so that you can understand what is the meaning of radial directions. Okay, so if heat is being conducted in this direction, suppose heat is being conducted in this direction, then the temperature at this location, the temperature at this location, the temperature at this location, the temperature at this location will be different. In fact, because heat is conducted in this direction, because it means that T1 will be more, T2 will be less, T3 will be less, T4 will be less. Fine. So if this is the R direction, correct? One more direction is the theta direction. Theta direction. इसके लिए मैं आपको एक नाम दे देता हूँ. You should know this is called azimuthal direction. Azimuthal direction. ठीक है? Direction. तो ये R, Z and theta. Now theta is which direction? Suppose if heat transfer is not taking place in axial direction. अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हो कि सर क्या जरूरी है कि एक बार में एक ही डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा? नो, ऑफ कोर्स
at once, just like in Cartesian coordinate, heat transfer in cylindrical coordinate also can take place in all the three directions at once. But it will be very difficult to analyze that equation. It will be difficult for us to derive the result also. So to keep the derivations mathematically simple, we generally say that heat transfer is normally taking place. एक तो देखो हम रेडियल के अलावा और कोई बात भी नहीं करेंगे. हाँ, एक्सियल किया जा सकता है. It's easy to derive. Which direction is theta? Suppose if axial heat transfer is taking place, there is variations in temperature in this direction. If radial heat transfer is taking place, there is variation in temperature in this direction, like this. If theta direction में heat transfer होगा, it means in that case, what is the meaning of theta direction? Let me show you. अगर theta direction आपको दिखानी है, तो theta direction का मतलब होता है कि at a given radius, if you go in this direction, are you getting this? This is called theta direction. Means the temperature at this location and the temperature at the same radius at this location, are they different? If they are different, this direction is called the theta direction. ये T2 है क्या? ये भी T2 है. Suppose if this is T2 and this is, suppose let me give it a name, T2 dash. If T2 is equal to T2 dash, it means heat transfer won't take in theta direction. If T2 and T2 dash are not equal, it means heat transfer will take place in theta direction. मतलब this is the direction Z, this is along the radius this. मैं भी यहाँ पे खड़ा हो गया है ना. This is the direction Z at this location, in this direction, radius. But suppose at this location I am in this direction. Are you getting this? देखो भाई, इस distance from this axis, if you take a distance, you can make an imaginary circle. ऐसे कर लेते हैं. This is the axis. At this distance, if the heat transfer is taking place in radial direction, then this temperature and this temperature will be different. Now forget about radial. If the heat transfer is taking place in theta direction, then at this distance only you can make a circle. You can make a circle like this, right? If temperature variations are present in this direction, are you getting this? At the same radius, you can make imaginary circle. If there are temperature gradients in this direction, right? If there are temperature gradients, in that case, you'll say that, okay, this one is a theta direction heat transfer. That is the azimuthal direction, right? So, वही बताया मैंने. At a given radius, if there is a difference between these two temperatures, then it will be theta direction. You may also say, sir, what about this temperature and this temperature? But obviously, if radial heat transfer is taking place, suppose, देखो सीधा सादा फंडा बताता हूँ. एक बहुत अच्छी सी एक मुझे अभी एक ख्याल है, मैं आपको एक और कुछ बना के दिखाता हूँ. देखो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट स्टिल अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ थीटा है क्या. थीटा में तो कभी बात ही नहीं होगी, चिंता मत करो, है ना. एंड आई डोंट वांट टू मेक द सब्जेक्ट अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स. जितना कॉम्प्लेक्स है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ले आएंगे, जबरदस्ती की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी है, ठीक है. Still trying to be perfect to make a circle. काफी सर्कुलर हो गया, ठीक है. Suppose this is the cross section view of a cylinder. ये जो व्यू आया है ये किसी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन व्यू है, ठीक है. Trying to be perfect again here. अभी प्रैक्टिस चल रही है ना. Right. Suppose this is the cross section view of a cylinder. Now, let me make some image. Suppose this is your diameter, this diameter, and this is your center, correct? Let me make some imaginary circles. Imaginary circles. ज़्यादा नहीं बनाते, 2-3 बनाते हैं, 2 या 3 ही, है ना. 3 तो इधर भी बनाए, 2 ही बनाते हैं. This green color is little bit lighter, so I'm trying to make a thick. This circle is imaginary. अभी मत करेंगे सर आप कंपोजिट क्यों पढ़ा रहे हो, अभी कंपोजिट नहीं आया. बहुत इजी पार्ट है कंडक्शन. देखो, कंडक्शन बहुत इजी पार्ट है, कन्वेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है. वाई थोड़ा सा ट्रिकी? आई विल एक्सप्लेन. कंडक्शन तो इतना ज्यादा आसान है, इसका तो लोड लेने की जरूरत ही नहीं है. एंड आई होप आपने पेपर भी सॉल्व किए होंगे. कंडक्शन की प्रॉब्लम्स कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे सॉल्व ना हुई हो. वेरी इजी प्रॉब्लम्स, बहुत आसान सब्जेक्ट है ये, है ना. जबरदस्ती वेटेज दे दिया इतने नंबर से, अच्छी बात है आपके लिए, है ना. दैट इज वन इमेजिनरी सर्कल एंड देयर इज वन मोर. Sorry.
There is one more. These are imaginary circles. I am trying to imagine some cylinders in this body. So you can say that this will be a cylinder like this. Imaginary cylinder, imaginary, है ना? ये ऐसा दिख रहा है ना? And this cylinder is like this. Diagrams अगर थोड़ी सी visualization थोड़ी सी better हो ना, तो understanding अच्छी होती है, right? और visualization के लिए मुझे आपको कुछ animation दिखाने की जरूरत नहीं है, ये diagrams बहुत है, ठीक है? So आप हर तरह का क्रॉस सेक्शन मैंने कोशिश की है बनाने की, ठीक है? एंड आई हैव आल्सो ट्राइड कि जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप वहीं देखो, आप कुछ और इमेजिन ना कर लो इसे, ठीक है? I mean, I wanted to show that this is a cylinder which is kept a little bit such that it's okay, its face, it's this face is in your front. थोड़ा सा इस सिलेंडर को मैंने ऐसे रखा हुआ, समझ रहे हो ना, like a little bit tilted. Now suppose I am giving some values to these temperatures. Let's say that I'm giving some temperature values. Let's say that this temperature is T1 and this temperature is T2. ठीक है? Let's say that this temperature is, ये बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ना, T1 dash and this temperature is T2 dash. ये सब ख्याल पढ़ाते वक्त ही आता है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप नहीं मानोगे. whenever I take class, कई बार मुझे ख्याल आता है कि यार ये टॉपिक से कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है, right? If you don't have the understanding of theta direction, right, it can be a problem for you. This can be T1 double dash and T2 double dash, right? What can you say about, suppose if, अच्छा एक्सियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर अभी एक्सियल तो सभी को समझ आ गया ना, एक्सियल क्या है, बट एक्सियल में ये बात नहीं करते हैं. इफ हीट ट्रांसफर इज नॉट टेकिंग प्लेस, if heat transfer is not taking place in z direction, ये तो ठीक है, ये फिक्स है. heat transfer is not taking place in z direction, right? Suppose next case is, ये तो फिक्स है. next case is if ht is only in r direction, not in theta direction. r direction, not in theta direction. theta direction azimuthal direction में कोई heat transfer नहीं हो रहा. What can you say about this now? If heat transfer is only taking place in r direction, means the radial direction, which is this, then obviously T1 will not be equal to T1 dash, will not be equal to T1 double dash. You may ask, sir, कौन सा greater होगा? Depends upon the direction of heat transfer. If heat is being conducted in this direction, this will be highest, this will be lower, this will be lowest. So, but ये तो कह ही सकते हैं, they will be unequal. But what you can say about the heat transfer is not taking place in theta direction. This is the theta direction. This direction is the theta direction. So this time, if there is no heat transfer, it means T1 must be equal to T2. In this direction, if there is no heat transfer, means T1 should be equal to T2. T1 dash should be equal to T2 dash and T1 double dash should be equal to T2 double dash. अगर इस डायरेक्शन में, देखो ये कॉन्सेप्ट में अभी ले आया, इसी तरह से कंटेंट बनता है. इफ यू आर continuously thinking about this subject, you can develop your unique content, जो किसी से भी अलग होगा, किसी बुक से भी नहीं मिलेगा आपका कंटेंट, राइट? और वो तभी डेवलप होगा जब आप सब्जेक्ट के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हो. एंड आई हैव दिस हैबिट, द सब्जेक्ट विच आई एम टेकिंग हियर, उसके बारे में जो ख्याल है, क्वेश्चन है, वो दिन भर चलते रहते हैं, है ना? सो कैन आई से दिस, इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर, अच्छा यू मे आस्क सर व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस? ऑफ कोर्स दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, because this is equal to this and this is greater than this, so obviously T1 is not equal to T2, and of course this also. We can also say that T2 is not equal to T2 dash, is not equal to T2 double dash. ठीक है? If ये मतलब है theta direction में heat transfer ना होने का. If heat transfer is taking place in both the directions, in r direction also and theta direction also, then none of the temperatures will be equal. None of them will be equal. If heat transfer is taking place in both r and theta direction, if heat transfer is taking place in both
R and theta direction, then या अगर बोल लो कि R में नहीं हो रहा, if heat transfer is not taking place in the radial direction, these temperature will be equal, these temperature will be equal. If it is taking place only theta direction, this two they will not be equal, these two they won't be equal, these two they not be equal, this will be equal, this will be equal. If it is taking place in both R and theta direction, in that case T1 all of them will be unequal. T1 dash they have to be unequal. भाई temperature gradient तो होना ही चाहिए ना. T1 dash T2 will not be equal to T2 dash, will not be equal to T2 double dash. Similarly, ये भी आपस if theta direction में भी heat transfer हो रहा है means T1 will not be equal to T2, T1 dash won't be equal to T2 dash, and T1 double dash won't be equal to T2 double dash. I hope अब इसके बाद आपको समझ आ गया होगा what is the meaning of heat transfer in R direction, theta direction and Z direction. Z direction is this direction. अगर यहाँ से यहाँ if axial heat transfer is taking place, it means this temperature, this temperature, this temperature, they won't be same. Correct? Now let's talk about which particular case I am assuming. I told you that in most of the cases we say that heat transfer is taking place only in the radial direction. So now pause कर लो वीडियो, बनाना चाहो बना लो, है ना? And let us assume that heat transfer is taking place in the radial direction. Let's talk about the derivation of heat conduction equation. Same thing, heat generation rate is Qg, right? Kinetic potential energy changes are negligible. Okay, so एक चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो बहुत जरूरी है, that assuming heat conduction is taking place only in the radial direction. Assuming heat conduction is taking place only in the radial direction, only in the radial direction. Correct? So if radial direction heat conduction is only taking place, it means that temperature is a function of R, and because we will also write unsteady state, so it will be a function of time also, it means partial derivative should be used. Okay, so how to write the equations? First of all, I'll have to derive the result. So derivation कैसे करनी है भाई? Suppose if this is your cylinder, right? If this is your cylinder, है ना? We have the cross section of cylinder like that. वहाँ पे मैंने exact circular बनाया है, you know that ऐसा नहीं होता. Circular होता है, but it won't appear as a circle if the cylinder is kept like this. Okay. Fine. This is the axis of the cylinder. Okay, this is the axis of the cylinder. Now, suppose that heat transfer is taking place in a particular direction. एक चीज समझो कि whenever you have a cylinder and now you want to write the balance, आपको याद है I was having a cubical shaped solid. This cylinder is also a solid cylinder. This is not a hollow cylinder. अभी मैं hollow की बात ही नहीं कर रहा. This is just a cylindrical coordinate system की बात कर रहा हूँ. See, there is one very important point. मैंने जब heat transfer पढ़ाया था, then I came to know in the classroom there were 50-60 students sitting. Most of them were not clear that how to select the element. Element selection was not clear. If element selection is not clear, then they don't understand that how to proceed with the derivation. Element कैसे select करना है? Please note that if you see the previous lecture derivation about the this was a cuboid, it was a rectangular coordinates. I take a cube or cuboid of a solid. What was the shape of the element? The small element which I selected, that was also a cube or cuboid. देखो एक चीज समझो कि अगर आपका जो solid है that is in the shape of a cube, your element will also be of cubical shape. If your solid is in the shape of a cylinder, your element will also be in the shape of a cylinder of very small radius. You can call it a cylindrical shell, right? Cylindrical sheet. तो इसमें if your solid is a sphere, your element will also be a spherical shell. ये ध्यान रखना है. If your solid is a rectangular slab, your element will be like a thin sheet. So आपके solid का shape and जो आप element select करते हो for writing the balance, उसका shape, the shape is exactly same. So क्यों इसमें why? So that you have to understand.
element is always selected in the direction perpendicular to the direction of transport of the quantity. This is a very important rule of transport phenomena. आप जो element select करोगे, that element should be perpendicular to the direction of transport. Now, what is the direction of transport? Radial. What is the radial direction? क्या एक ही direction है radial? No, it is along the radius. This. तो इसके perpendicular जो बनेगा वो भी तो एक cylinder ही होगा, right? So how the element is selected? If you want me to repeat that line, that an element should be selected such that it is always perpendicular to the direction of transport of the quantity. What is the meaning of quantity? Or entity also you can write. The meaning of quantity can be heat, can be mass, can be momentum. Let me take a small cylindrical shell. ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ये एलिमेंट सिलेक्ट करना अगर आपको नहीं आता है, then you won't be having confidence in the derivations of heat transport or any other transport also. Fluid mechanics में भी same thing. We have to select elements, right? So मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे. An element for writing balances is always selected such that its direction is perpendicular to the that it is perpendicular. Don't write element की कोई direction नहीं होती. That it is perpendicular to the direction of transport of the entity. That it is perpendicular to the direction of transport of entity. Okay, direction of transport of entity. तो element देखो, what is the direction of transport? This is the direction of transport. This is the direction of transport. This is the direction of transport. अब अगर आपने ऐसा element select कर लिया, then this is the direction of transport, right? Is this direction is perpendicular to your selected element? No. So everywhere your element should be perpendicular to the direction of transport. It means that element has to be a, और ये सर्कल नहीं होगा भाई. देखो सिलेंडर ऐसा कुछ समझो, कैसे कहे. Suppose you have a solid cylinder. You have a solid cylindrical body, correct? एक आप ग्लास लो, आप ऐसा समझो ना, there is a soft cake होता है. Suppose your cake, I have seen cake in cylindrical shapes. Your birthday cake और एक कोई cake आता है red velvet. I don't know the brand. I don't know the names of cake. I'm not very good at that. So suppose there is a cake of cylindrical shape, right? And you have a kind of you have a glass. स्टील का ग्लास है आपके पास. सपोज you have a cake like that. You have a cake, cylindrical cake, and then you put the glass in such that the diameter of the glass is less than the diameter of the cake. If you put the glass in between, what you are going to get? You will create a space. आप एक छोटा सा space create करोगे. That space is the element. Now that space will not be a circle. That space will be a thin sheet of cylinder. Cylindrical shell बनेगा. That cylindrical shell I am talking as the element. तो ये एक circle नहीं होगा. It will be the entire shell. This will be the element. So element should always be perpendicular to the direction. अब अगर मान लो transport will be in axial direction, मैं element ऐसा select नहीं कर सकता. You won't believe me कि जब हम बीटेक में थे तो ये चीजें समझ ही नहीं आती थी. There was a question, एक बार माइनर्स हुए, माइनर्स में हमारे फैकल्टी ने क्वेश्चन दे दिया that derive the expression when the heat is getting transported in the axial direction. अब मैं थोड़ा पता नहीं मैं किस तरह का स्टूडेंट था कि मुझे नहीं आता था तो मैं नहीं लिखता था. मैं बोलता क्यों फालतू इसमें पंगे लूं. एंड आई वाज नॉट एबल टू डिराइव. आई गॉट 0. वन ऑफ माय फ्रेंड व्हाट ही डिड, उसने बस एलिमेंट बना दिया था. शायद सही एलिमेंट बनाया था. एंड द क्वेश्चन वाज ऑफ 15 मार्क्स. आई थिंक ही गॉट 10 to 12 मार्क्स. एलिमेंट बना दिया, दैट्स डन, राइट? सो ये सब चीजें आपको समझ नहीं आती थी उस समय, बट दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. इफ योर सिस्टम इज सिलिंड्रिकल, योर एलिमेंट शुड also be a cylindrical element, right? If your system is cylindrical, your element should also be a cylindrical element. तो ये element, suppose the length of your cylinder is L. The length of the cylinder is L. ये इधर भी है ना? The length of the cylinder is L. The radius of cylinder is
फिक्स, सिलेंडर का रेडियस कम नहीं होता, इट इज कैपिटल आर, राइट. द एलिमेंट विच यू हैव सिलेक्टेड द एलिमेंट एट अ लोकेशन आर एंड द थिकनेस ऑफ द एलिमेंट इज डी आर, राइट. अगर थिकनेस की बात कर लें, आप थिकनेस को ऐसे लिख लो, द थिकनेस ऑफ द एलिमेंट इज डी आर. So the location where you have selected the element is R, the thickness of the element is dr, and the radius is capital R, length is L. अब derive कर लें, ठीक है. Now you know that, अच्छा, I'm assuming that the heat is getting transported from in to out. अब out to in भी कर सकते हो, that is not a big deal, कोई problem नहीं उसमें. Assume that heat is transported by conduction only, है ना. जस्ट लाइक बिफोर, देखो मैं कंडक्शन की इक्वेशन डिराइव करा रहा हूं तो कन्वेक्शन क्यों ले आऊंगा बीच में. हीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय कंडक्शन ओनली एंड दैट आल्सो फ्रॉम इन टू आउट. ओके, अज्यूम दैट हीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय कंडक्शन ओनली फ्रॉम इन फ्रॉम क्या लिखे, conduction only from this inner of the cylinder to the outside. Okay, from inner part to outer, means this is the direction of heat transfer. Also, if you ask me the direction, this will be the direction from inside to the outwards. Okay, inner part to outer. What else? Same. QG is the volumetric rate of heat generation. तो लिखना शुरू करते हैं. So if I consider this element, आप इस element को यहाँ पे अलग से बना लो, बस मैं element बना रहा हूँ. This was my element. Okay, this was the element. So this element was located at a distance r from the center. This is the center. So the Q which is entering here. अब देखो बाकी के directions की तो बात ही नहीं करनी है हमें, so don't worry about that. The Q which is entering here is QR and the Q which is leaving here is QR plus dr. Not a problem. Fine. So how to write the balance? Energy in. शुरू कर देते हैं, अब तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना, वहां पे समझा दिया QR in. ठीक है, आपका कोर्स में मैं बहुत टाइम बचाऊंगा, फालतू की चीजें बताने वाला ही नहीं, एक जगह बताऊंगा उसको बार बार यूज करेंगे. ठीक है, फालतू बातें नहीं पढ़नी. ठीक है, QR in माइनस आउट QR plus dr. ओके, plus generation. Yes, consumption is not there, but I am assuming generation. So Q generation. Now there is a problem. What is the problem? Now there is a problem that अब Q generation के साथ you should multiply by the volume of the body. Now the thing is, can you multiply this by pi? What is volume of a cylinder? Pi r square h. Pi capital R square into L. Can I write that? No, because this balance I'm writing on the element, so I should write volume of the element. क्या मैं पूरे cylinder पे balance लिख रहा हूँ क्या? No, I'm not writing the balance on the entire cylinder. I am writing the balance on this small shell. ठीक है, केवल शेल पे बैलेंस लिख रहा हूं, तो ये ध्यान रखना. सो आई शुड राइट द वॉल्यूम ऑफ द शेल. अब यहां बच्चे फंसते हैं, सर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द शेल? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द शेल? यस, टेल मी. कैसे बताया यार, बताओ वॉल्यूम ऑफ द शेल क्या? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द शेल को, दिस इज अ स्मॉल शेल, इसको ऐसा लिख लेते, बना लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द शेल, दिस इज योर शेल. ओके, कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम? Can you say, do you know that volume is area into height? Suppose if you talk about a thick sheet of metal, then its volume is area into thickness, right? Area into thickness is the volume, na? What is the area of this? Surface area into thickness. What is the surface area? No, 2 pi RL is the surface area. सही हूँ ना मैं? Yes, 2 pi RL is the surface area. Sorry, the surface area is, it is 2 pi RL. Fine. Now 2 pi RL. And what is the thickness? The thickness is dr. That is the volume. ठीक है भाई, इसका वॉल्यूम लिखना है. देखो pi r square h मत लिखना आप. This is a solid. This entire cylinder is a solid cylinder. This entire cylinder is a solid cylinder, and its volume is pi r square h. But if this distance is, suppose this distance is r, I'm just talking about the element. There is nothing in between here. I can't write pi into small r square into h or l. I can't do that. क्या यहां से यहां के बीच में कुछ है? रियलिटी में तो है, बट व्हेन आई एम राइटिंग बैलेंस ऑन द सिस्टम, व्हेन आई एम राइटिंग बैलेंस ऑन द एलिमेंट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन दीस टू. एलिमेंट तो इमेजिनरी होता है ना, एलिमेंट इज इमेजिनरी. इन द इमेजिनरी एलिमेंट देयर इज नथिंग इन बिटवीन दिस पॉइंट एंड हियर. देन हाउ कैन यू राइट द बैलेंस? अच्छा, मैं ये बता दूं, देखो ये जो वॉल्यूम लिखना है, ये वॉल्यूम क्या आप पाई आर स्क्वायर एल लिखोगे? क्या आप पाई आर स्क्वायर एल लिखोगे? ये भी गलत है, ये भी गलत है.
ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि भैया सॉलिड नहीं है, it's just an imaginary element and there is nothing in between. Then how to write the volume of this? I can use the concept of area into thickness. The area is 2 pi RL. So DL भी लिख सकते हैं, RL भी लिख सकते हैं, it's okay. Q generation 2 pi R L and L multiplied by thickness dr. That is the volume of the system. यहाँ स्टूडेंट्स बहुत फंसते हैं, क्लास लिया था पूरी क्लास खराब हो गई थी इस चक्कर में कि सर वाई 2 पाई, ये नहीं समझ पा रहे थे। क्यों? बिकॉज दे अज्यूम कि सर यू हैव सिलेक्टेड द एलिमेंट एट दैट लोकेशन, सो यहां से यहां तक भी तो देयर इज सम मेटल, सो द वॉल्यूम मस्ट बी पाई आर स्क्वायर एच। ये एलिमेंट में कोई मेटल नहीं है, ओनली दिस थिकनेस इट इज मेटल, सो एरिया इनटू थिकनेस बिकम्स द वॉल्यूम ऑफ द शीट। ओके, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल शीट। आप ऐसा अज्यूम कर लो ना कि इसको काट के खोल के ऐसे स्क्वायर बना लिया, देन ऐसा ही कुछ होता है ना, अगर आप एक रजिस्टर फोल्ड कर लो, ऐसे खोल लो, स्क्वायर बन जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हिच टर्म? जनरेशन टर्म इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन टर्म, d by dt of what I can take, m is rho, right? Volume same thing, बिकॉज एलिमेंट का वॉल्यूम लेना है ना, 2 पाई आर एल इंटू डी आर, दैट बिकम्स डेंसिटी, दिस इज डी आर सी इंटू टी। ठीक है, ठीक है, सी इंटू टी स्पेसिफिक हीट। ये देख लेना, पाई आर स्क्वायर एल या पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल नहीं होगा। नाउ आई कैन यूज द दिस Fourier's law of heat conduction. कैसे? What is QR? First of all, let us expand this. So QR and this QR will be cancelled, जो मैंने आपको बताया था. What is QR plus DR? QR plus DR is equal to QR plus del by del R of QR into DR. ठीक है? So it will be minus del by del R of QR into dr plus Q generation into 2 pi R L dr is equal to rho into 2 pi R L dr dt by, यहाँ भी पार्शियल यूज कर सकते हो, उसमें घबराना नहीं कि सर आपने क्यों नहीं यूज किया, कोई इसके पीछे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 pi R L dr del t by del t. Right, so Fourier's law of heat conduction, let us apply the conduction rule. Del by del R माइनस, अब k को गड़बड़ नहीं करेंगे, ओनली 1k, एक ही डायरेक्शन है भाई, बाकी डायरेक्शंस की बात ही नहीं हो रही। एरिया, नाउ देयर कम्स अ बिग डिफरेंस इन द प्रीवियस डेरिवेशन एंड दिस डेरिवेशन। इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, व्हाट डू यू थिंक? इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, एरिया इज कांस्टेंट और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? आई मेड वेरियस सिलेंडर्स, राइट? If suppose you are here, the area will be, suppose if you are here, the area will be the surface area of this cylinder. If the heat transfer is taking place at this point, area will be surface area of this cylinder. यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है with the previous case, that the area of heat transfer is changing with a radius. That is the difference here, right? So अभी तो बस को मैं A लिख दे रहा हूँ, इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे कि A del t by del r. आप बोलोगे कि सर हमने del t by del x पढ़ा था, that depends upon the direction, it is radial direction, so del t by del r. Okay, del t by del r Ka multiplied by dr plus Qg 2 pi rl dr is equal to rho 2 pi rl dr del t by del t. ठीक है, now there comes a big problem here that in a cylindrical coordinate the area changes in the direction with radius. obviously चीज है ना, अगर मैं ये एलिमेंट यहाँ पे बनाऊं, उसका सरफेस एरिया, नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, कौन सा एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर है? हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन दिस डायरेक्शन, तो दिस क्रॉस सेक्शन एरिया शुड नॉट बी काउंटेड। हियर आल्सो क्या लगता है, यहाँ पे डायरेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, यस, द सरफेस एरिया शुड बी काउंटेड। ओके, सो when heat transfer takes place in radial direction, when heat transfer takes place in radial direction,
When heat transfer takes place in radial direction, the area of heat transfer, please note, मैं area लिख दूंगा तो आप घबरा जाओगे कि area मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, नो, area of heat transfer which is the surface area. भाई this is your cylinder, this area I'm talking about, not this area. क्या heat ऐसे जा रही है? No, heat is going in the radial direction. अगर axial direction में heat transfer होता तो मैं क्रॉस सेक्शन एरिया लेता, and of course क्रॉस सेक्शन एरिया is not changing, है ना. तो इसलिए फंडा, छोटे छोटे फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए. When heat transfer takes place in the radial direction, the area changes, in fact increases with the radius. So it means area is a function of radius. If area is a function of radius, can A be taken out? No. A constant नहीं है. R, this is del by del R, and A is a function of R, so I cannot take A outside this, right? Now, what is the cross section area, surface area for heat transfer? What is that area? बताओ. Area for heat transfer. If you talk about this element, it is 2 pi RL. Don't write dr. Surface area 2 pi RL. This was area into thickness was volume. If you just talk about the area is 2 pi RL. Now put the values, get the answer. Let's see what the equation we are getting. एरिया की पहले तो वैल्यू डालते हैं, देन लेट्स सी. अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम इस एरिया को बाहर निकाल लेते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है. ठीक है, आई होप नाउ आई कैन इरेज दिस पार्ट. ओके, सेम डील विद स्फेरिकल. अब स्फेरिकल का तो मैं तुरंत डिराइव कर दूंगा. स्फेरिकल में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ओनली रेडियल डायरेक्शन आई विल बी टॉकिंग अबाउट. इन स्फेयर, सो इन स्फेयर आल्सो यू हैव आर, थीटा एंड फाई. यू नो, फाई को एक्सप्लेन करना यहाँ पे जरूरी नहीं है ना, मैं करूंगा. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, you can write k can be taken out, that is not a problem, and then it will become a positive sign. So k del by del r, I can't take area outside, please note. So 2 pi RL del T by del r. Very carefully you have to open each and every bracket. This is dr, right? This is pi, okay, plus q generation 2 pi RL dr is equal to rho into 2 pi RL dr del T by del T. ठीक है, ठीक है ना. ये सारी डेरिवेशंस आपको इस तरह से करनी आनी चाहिए. इन डेरिवेशंस को करने के लिए मुझे एक बार भी बुक या नोट्स नहीं देखने पड़ते हैं. आपकी भी यही सिचुएशन होनी चाहिए इन ऑल दीज डेरिवेशंस. देन यू हैव कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस आता है बार बार लिख के विदाउट लुकिंग एट द नोट्स. कीप राइटिंग. फॉरगेट इट. हमेशा मुझसे पूछते सर और क्या करूं. मेरा हमेशा यही कहना है कि इन्हीं चीजों को लिखते रहो. वट एवर आई एम टीचिंग इन क्लास, कीप राइटिंग. अब रजिस्टर भर डालो. रजिस्टर, पहले रजिस्टर पे लिखो, फिर रजिस्टर पे लिखो, फिर A4 शीट पे लिखो, फिर डायरी में लिखो, फिर शॉर्ट नोट्स में लिखो. लिखते रहो बस. कीप राइटिंग दीज थिंग्स टिल गेट एग्जाम. That should be the only common strategy. Preparation strategy सभी के लिए अलग अलग होती है. You have, all of you are in different, there is no common preparation strategy for all of you. हाँ, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी सेम हो सकती है, क्योंकि पेपर के लिए सभी को सेम टाइम और सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है. बट प्रिपरेशन के लिए ऑल ऑफ यू आर हैविंग डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट फील्ड्स. समवन इज वर्किंग, समवन इज स्टडिंग, समवन इज फ्री, someone is in third year, someone is in final year, someone is MTech second year. So how preparation strategy can be common? Someone is already 200 ranker, someone is already 700 ranker. किसी का आज तक किसी ने गेट नहीं दिया, तो कैसे इन सबकी स्ट्रेटेजी कॉमन हो सकती है? There can, if someone is telling you a common strategy to prepare, then he is making fool of you. Simple. He or she is making fool of you, right? But one common strategy, देखो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होगी, बट प्रिपरेशन के लिए एक जो फंडा है वो फंडा सबका सेम हो सकता है. कीप राइटिंग. रजिस्टर भर डालो, मतलब न जाने हर जगह लिख डालो, किताबों में लिख डालो. सम पीपल लव बुक्स, कुछ लोग किताबों को बहुत तरीके से रखते हैं. अगर रखते हैं तो ठीक है, रखो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम. मैं तो लिखता हूँ बुक्स में, ठीक है. मेरी बुक्स बीटेक की बुक्स हैं, बट आई प्रिजर्व देम एज वेल. बीटेक की 11th स्पील मैंने अभी तक रखी, बिकॉज 11th स्पील मैंने पैसे देके खरीदी थी भाई. 11th स्पील, स्टेफनोपोलस, दीज आर सम बुक्स व्हिच आई परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट, राइट. तो उनको अभी तक रखा है, उनको मुझे कहीं देने का मन नहीं करता, बट उनको भर दिया है मैंने. हाइलाइटर, पेन भर रखा है, राइट. पता नहीं कि न जाने कितनी बार पढ़ लिया, ठीक है. सो आपको लिखते रहना यार. रीडिंग वॉन्ट हेल्प यू. दीज डेरिवेशंस आप खोल के बैठ के पढ़ते रहो, देयर विल बी नो इफेक्ट. It is as good as doing nothing if you are reading the derivations. Write them. Keep writing them. Right? ले आओ A4 शीट्स का बंडल, और या आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो एक रजिस्टर ले आओ, नो प्रॉब्लम. और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो तो एक बोर्ड रख लो ऐसा, 2x4 का बोर्ड,
2/4 और 3/4, 3 का कोई फायदा नहीं, और 2/4 बोर्ड इज सफिशिएंट। 2/4 का एक बोर्ड ले आओ, बोर्ड नहीं चाहते तो एक ग्लेज्ड शीट सी आती है, उसके नीचे रॉड्स लगे होते हैं सो दैट इट कैन बी हैंग्ड ऑन द वॉल। टांग लो, कीप राइटिंग, लिखते रहो, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, एकदम घुल मिल जानी चाहिए, आपके ब्लड में घुल जाने चाहिए सारे डेरिवेशंस। ओके, अगर वैसी प्रिपरेशन है तभी काम आएगी, वरना फिर देखते रहो स्ट्रेटेजी, सुनते रहो मोटिवेशन, मोटिवेटेड तो रहोगे पर रिजल्ट नहीं आएगा भैया। मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, है ना, डिस्कशन सब्जेक्ट चाहिए। ओके 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 राइट। सो के del by del r, एवरीथिंग आई हैव डन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सीधी सी बात है, देखो, अच्छा del by del r से क्या r को बाहर निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट, बट 2 pi l कैन बी टेकन आउट एंड देन k। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू दैट, dividing the entire equation by 2 pi rl dr, dividing the entire equation, k से भी डिवाइड करना ही है तो वो भी कर देते हैं, by 2 pi rl k dr। ठीक है, इससे डिवाइड कर देते हैं। दिस 2 pi r, देखो ये r बाहर नहीं जाएगा बिकॉज देयर इज अ डेरिवेटिव, दिस इज द स्पेशल केस फॉर सिलेंडर, ये r बाहर नहीं जाएगा। ओके, सो 2 pi l k will be there, 2 pi l k will be cancelled, dr will be cancelled, there will be 1 by r। और यही 1 by r आपको लगता है कि यार ये कैसे आया? 1 by r del by del r of r del t by del r, dr भी सब कैंसिल हो गया, 2 pi r l dr प्लस qg by k, 2 pi r l dr, कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे, c भी होगा ना, 2 pi r c, भाई यहां पे भी सी लिख लो, मैं पहले ही कह रहा हूं चीजें छूटेंगी। सी करेक्टेड, सी ओके, 2 pi r l dr इंटू सी, ओके 2 pi r l a dr इंटू 2 pi r l, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, इज इक्वल टू रो सी बाई के, सो आई कैन राइट 1 by अल्फा अगेन एंड डेल टी बाई डेल टी। अल्फा सेम मीनिंग, equation of heat conduction in cylindrical coordinates in radial direction only। थीटा आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको, हाँ आप थीटा वाला भी डिराइव कर सकते हो करेक्ट एलिमेंट लेके, या फिर साइन कॉस करके। वो साइन कॉस की डेरिवेशन तो टोटली यूजलेस अनलेस यू आर अपेयरिंग फॉर सम डीआरडीओ और सम इंटरव्यू, तो तब देखेंगे। गेट के लिए वो यूजलेस है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, दैट वाज फॉर सिलेंडर। अब एक काम करते हैं, यहीं पे मैं आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का बनाता हूं, नोट डाउन, सारा नोट कर लो। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, नाउ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आई वांट spend a lot of time. The only thing you should understand that in spherical coordinate, what will be the shape of the element, what will be the volume, what will be the surface area। अगर वो समझ गए तो डेरिवेशन तो वैसे ही कर ली। एंड अगेन आई एम अज्यूमिंग ओनली कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस, हीट जनरेशन, वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट जनरेशन इज QG। आइए एक स्फीयर बनाते हैं। तो स्फीयर तो मैं 2D में कैसे बनाऊंगा? स्फीयर आई विल ओनली मेक इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इफ इट इज 2 dimension, the sphere will appear as a circle. Again, it is kind of oval. I told you that I'm doing this practice to make a circle at once. फिर नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है। A little bit spherical, suppose spherical. Okay, this is a sphere, this is the center. Only radial direction heat transfer। देखो sphere का element एक spherical shell होगा। The element which is required for writing the heat transfer will be a spherical shell, but again I can't show a spherical shell on 2-dimensional board, so I have only one choice to make a ring kind of element, but please note कि ये ring नहीं है, this is a spherical shell, sorry, this is a spherical shell, right? So this spherical shell is present at a distance of, अब आप सोचो इसके बारे में, सोचो, अगर आपको समझ आया तो ये this is distance present at a distance of r, please note that the entire radius is r, ठीक है, वो तो अलग बात है, entire radius is r। Again, heat transfer is taking place from inside to outside. That is okay. The thickness is dr. The thickness is dr. और तो कुछ होता नहीं है. Okay. Now, I'm writing balance on the element. बहुत जल्दी लिख लेते हैं. QR minus QR plus dr plus QG. Now, what is the volume? इसका volume समझ जाओगे तो काम हो जाएगा. This is a spherical shell. Spherical shell. There is nothing in between. If you just see the element, there is nothing in between this center and the element.
So what is the volume? Area into thickness. What is the area of a sphere? 4 pi r square. What is the thickness? Dr. So it should be 4 pi r square dr. That is the volume. Okay? Is equal to, there is no consumption, is equal to rho C. Rho into volume becomes mass. What is volume? Volume is same thing. 4 pi r square. It is right now. Surface square. 4 pi r square dr and del t or del t by del t. अब यहाँ पार्शियल यूज कर लिया मैंने, ठीक है, इट्स ओके, चलेगा. दिस इज क्या लिखेंगे? माइनस डेल बाई डेल आर ऑफ के अगेन हियर इन द रेडियल डायरेक्शन. यहाँ का एरिया इज चेंजिंग इन द रेडियल डायरेक्शन, सो माइनस के ए del t by del r. Now what is this area? This is surface area. Surface area is 4 pi r square plus qg 4 pi. देखो मैंने भाई स्पीड पकड़ ली है, मैंने इसलिए पहले थोड़ा सा टाइम लिया. अब पकड़ेंगे हम स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. पर स्पीड में कई बार चीजें छूट भी जाती हैं, आपको भी ऐसे स्पीड पकड़ के डेरिवेशंस कर देनी है. व्हाट इज एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर. पुट द वैल्यू एंड दिस इज ओके, दिस शुड बी अ नेगेटिव साइन. इट विल बिकम पॉजिटिव. के इज कांस्टेंट, के को बाहर लो. डेल बाय डेल आर. Can I take 4 pi r square? 4 pi I can take outside, but r square I can't take outside. So del t by del r, right? Plus qg 4 pi r square dr is equal to rho into c 4 pi r square dr del t by del t. समझ आ गया? ठीक है. Now I hope all of you have understand that I have to divide the entire equation by 4 pi r square dr k. So dividing the entire equation, dividing this equation, okay, where should I write? I'm writing here, dividing the entire equation, not this, that equation. ये खत्म है यहाँ पे. Dividing the equation by 4 pi r square dr k. What are you getting? This 4 pi will be cancelled, k will be cancelled, r dr. Okay. There will be dr. Every time I'm missing something. ठीक है, it's okay. This will be dr. This will be dr. This dr will also be cancelled. Fine. What will be left? It will be 1 by r square del by del r of r square del t by del r. R square del t by del. Again, I am solving for sphere only in one dimension. Qg 4 pi r square dr will be cancelled. It will be qg. Please note that qg is the volumetric rate of uniform volumetric rate of heat generation is equal to 1 by alpha into del t by del t. ठीक है? अल्फा कहां से आ गया? All of you have understood. Rho Cp by k. Heat conduction equation for spherical coordinates. कोई sin थीटा cos थीटा कुछ नहीं करना, छोड़ दो उसको. आप बीटेक नहीं कर रहे हो, आप सेमेस्टर की चीजें अभी नहीं पढ़ रहे हो, है ना? वो जहां मैथमेटिक्स आपको पढ़नी थी आपने पढ़ ली. This is the heat conduction equation in radial direction. This is the heat conduction equation in radial direction. This is for cylindrical coordinates. This is for spherical coordinates. What was for okay, पहले तो लिख लो. ठीक है, तो पहला जो पॉइंट था, जो पहला मैंने आपको स्टेप लिखवाया था कंडक्शन के लिए कि आई एम गोइंग टू डिराइव द हीट कंडक्शन इक्वेशन, वो मैंने डिराइव करा दी. अब एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता, औपचारिकता को पूरी करा देते हैं. पहले ये लिख लो, है ना? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आपको थोड़ा बैलेंस करने का जो फंडा है वो समझ आया होगा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेलिटी? दैट if you talk about Cartesian coordinates only in x direction, then for Cartesian coordinates this is a formality and also a problem of gate. Cartesian, cylindrical and spherical. So in that case, what was the equation? It was del by del x. Okay, del by del x of del t by del x. ठीक है, del by del x of del. Of course, I can also write del square t by del x square. Not a problem. Del t by del x, del t by del x plus qg by k is equal to 1 by alpha. Because you can see the similarity is in all these equations. This was 1 by r into del by del r. 1 by r into del by del r of r del t by del r plus qg by k is equal to 1 by alpha del t by del t, है ना? और spherical 1 by r square into del by del r into r square del t by del r plus qg by k, okay, is equal to 1 by alpha del t by del t. Can you see the similarity? Okay, what is the formality? That I have to write a general equation. What is the general equation? 1 by r n into del by del r multiplied by r n del t by del r plus qg by k is equal to 1 by alpha
del t by del t. समझ आ गया? अब सीधी सी बात है, अगर मैं n को 0 पुट करूंगा, I will get the equation of Cartesian, right? Of course, in case of Cartesian, it will be del by del x, but that much can be understood, that much can be चला सकते उतना काम, हाँ, that much can be tolerated. If n is equal to 1, it will be cylindrical. If n is equal to 2, it will be spherical. This is a simple question from GATE. This was all about the derivation of heat conduction equation in various geometries. I have given you the fundamental that how to derive, how to write Qy plus dy, how to write all these energy balance equation, how to make use of this Qg. Okay. Now all these equations will be used to derive the temperature profile. अब इसके आगे मैंने आपको अगला क्या बताया था, to derive the temperature profile. In that case, we will also analyze some other things. So for deriving the temperature profiles in a cylindrical shell, suppose inside a wire, inside a solid cylinder, or inside a spherical shell, I'm going to use all these equations, right? So these are all differential equations. Of course, for solving the differential equation, we need some boundary conditions. Various boundary conditions will be there for various cases.